नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th। नाम जगदीश कुमार। क्वालिफिकेशन एम ए बी एड। डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री HSS नौक्सिनी डिस्ट्रिक्ट। और टॉपिक है हमारा द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड बुक है ये। सेकंड पार्ट है ये। यूनिट छठा है ये, द मुगल कोर्ट। वही यूनिट चल रहा है, काफ़ी देर से अरसे से हम पढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द एग्जाम्पल्स एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द मुगल्स क्रॉनिकल्स। तो मुगल्स क्रॉनिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट बुक का छठा क्वेश्चन है ये। द मुगल रूलर्स वर keenly इंटरेस्टेड इन गेटिंग their chronicles produced। तो मुगल जो रूलर थे वो अपने क्रॉनिकल्स का पूरा रिकॉर्ड रख रहे थे, बना रहे थे, लिख रहे थे। विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड दे पार्टनाइज मैनी स्कॉलर्स हिस्टोरी। उनके दरबार में स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे जो लिखते थे। द क्रॉनिकल्स रिटन बाय दिस कोर्ट हिस्टोरियन डील्ड विद द इंपीरियर एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज टाइम। दे आल्सो फोकस्ड ऑन द रॉयल फैमिली द कोर्ट। वो रॉयल फैमिली के बारे में लिखते थे। द नोबल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी। दीज क्रॉनिकल्स हैड बीन रिटन विद मैनी ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने लिख रखे थे। फर्स्टली दे कलेक्टेड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्राम एरियाज अंडर द एम्पीरियर। तो एरियाज की इंफॉर्मेशन। दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी द एम्पायर एंड द कोर्ट ऑफ इट। तो उनकी कोर्ट की इंफॉर्मेशन। सेकेंडली दे वर एम टू प्रोटेक्ट द विजन ऑफ एन इनलाइटेंड किंगडम। तो राज पर भी रोशनी डालते थे। थर्डली दे कन्वेड message to all the rebels, the persons who resisted the rule of the Mughal, that all resisted were fertile, doomed to fail. Thirdly, the rulers wanted to preserve the record for their rule of prosperity. They ensured that the future generation had full account of their rule. Undoubtedly, the chronicles commissioned by the Mughal Empire were an important source for study the empire and its court. From Turkish to Persian, the Mughal were basically Chagatai Turk, so Turk was their mother tongue. तो उनकी माँ तुर्किश थी, वो तुर्क भाषा भी बोलते थे, मदर टंग थी। हैंस बाबर रोट हिज बाबरनामा और तुझके बाबरी इन तुर्किश। तो तुर्किश में लिखी गई थी। हुमायूं हैड ए गुड नॉलेज ऑफ पर्शियन, सो अंडर हिज रूल मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स वर रिटन इन पर्शियन। हुमायूं के टाइम में ड्यूरिंग द रियन ऑफ अकबर 1556 to 1605 ग्रेट प्रोग्रेस वार विटनेस्ड इन पर्शियन लिटरेचर। तो उसमें पर्शियन लिटरेचर में किताबें लिखी थी अकबर के टाइम में। इट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अकबर हैड डिक्लेयर्ड पर्शियन एज द स्टेट लैंग्वेज। तो उसने स्टेट लैंग्वेज घोषित किया था अकबर ने। अकबर मेड पर्शियन एज स्टेट ऑफ लैंग्वेज बिकॉज ही वांटेड टू कीप कल्चरल इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट विद ईरान। तो उसका ईरान के साथ कॉन्टैक्ट था। सेकेंडली, अकबर वाज मोटिवेटेड टू अडॉप्ट हिज लैंग्वेज बाय दोज ईरानी एंड सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स हु वांट टू सीक पोजीशन इन द मुगल कोर्ट। थर्डली, दैट इन द टाइम द पर्शियन वाज कंसिडर्ड at the symbol of power and prestige. So Akbar had no hesitation in adopting it. Fourthly, this language was spoken by the king and the royal household, nobles and elite, so it had become their first love. Firstly, Persian soon became popular among the accountants, clerks and other functionaries of the state. It had become a language of the administration because all these factors. Persian had the considerable progress during the reign of Akbar. तो when Akbar ruled India, many important books were written in Persian. अकबर के टाइम में in them a few famous books like Akbarnama and Akbari by Abul Fazl, Tabaqat-e Akbari by Khwaja Nizamuddin Ahmed, Maktabul Turkish by Abdul Qadir Badiani, the Naldaman by Fezi according to Dr. Satish Chandra, a famous history. Persian prose poetry reached a climax during the Akbar reign. In the reign of Akbar, many Sanskrit and other textbooks translated into Persian. बहुत सी बुक पर्शियन में ट्रांसलेट की गई जो संस्कृत में थी, जैसे महाभारत रामायण है। विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड अकबर हैड सेट ए सेपरेट ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। इन्होंने डिपार्टमेंट ही बनाया था ट्रांसलेशन करने का। ही हिमसेल्फ लुक्ड आफ्टर हिज डिपार्टमेंट। इन हिज डिपार्टमेंट ही हैज़ इंगेज मैनी मुस्लिम स्कॉलर्स फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ वर्क। ए फ्यू इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स इंगेज फॉर ट्रांसलेशन इंक्लूडिंग अबुल फाजल नबी
Khan, Abdul Qadir Baduni, Akbar Rahim, Khan Khana. Many Hindu scholars were also engaged to help them. This department first of all translated the Mahabharata from Sanskrit into Persian, जैसे कि मैंने आपको बताया. It was a title led Razamnama, the book of war. Besides the it, Ramayana, Leelavati Raj, Tirangani and other Pantantra stories were also translated into Persian. Abdur Rahim Khan Khana translated Tuzke Babri from Turkish into Persian in the words of Dr. E. V. Pandey, famous historian. With these works become available, Persian Muslims got an opportunity to acquaint themselves with the Indian philosophy and science, and the more thoughtful among them acquired respect for the Hindu and the Muslim. Undoubtedly, under the reign of Akbar, a new age in the development of Persian literature started. According to the K. Nazmi, a famous historian, no period of Indian history can match with the reign of Akbar so far as the produced historical literature goes. Akbar own interest in the history even a long way, inspiring other undertake compilation with the historical work. तो उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था अकबर का. द डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ पर्शियन लिटरेचर कंटिन्यू ड्यूरिंग द reign of जहांगीर. जहांगीर के टाइम में भी पर्शियन में किताबें लिखी गई, ट्रांसलेट भी हुई. शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर रोड ऑटोबायोग्राफी तो उसके जहांगीर इन पर्शियन और बुक इन द इकबालनामा इन मोती खान by making तुझके जहांगीरी, इकबालनामा और मोती जहांगीर by the Badshahnaama, Abdul Hamid Lahori during the reign of Shah Jahan also become famous. His writing was further continued. Muhammad Waris. Many Sanskrit textbooks were also translated into Persian Jahangir के टाइम में. During the reign of Shah Jahan, Mirza Muhammad Kazim had written Alamgirnama in Persian during the reign of Aurangzeb, which became a famous. Besides, Maktab-ul-Lubab written by Kofi Khan also became very popular. Making of manuscripts. All the books prepared by the Mughal rulers were in the form of manuscripts. तो उनको manuscripts भी बनाया गया. The main center of preparing manuscripts was the Imperial Kutub-e-Khana. In reality, Imperial Kutub-e-Khana was the main scriptorium. It was a place where all manuscripts of the imperial were kept and new manuscripts were produced. A number of people were involved in the preparation of manuscripts. बहुत से लोग लगाए थे. They performed variety of jobs. The rule of paper making, prepared folios of the manuscript, the calligraphers who copied the text, blenders who eliminated the pages, the painters who illustrated the scenes, and the book binders which set up individual folios within the ornamental covers was praiseworthy, and workmanship with the manuscripts was ready. It was seen a precious and valuable objects of intellectual wealth and beauty produced by the manuscripts. The imperial displayed power and strength. Some of the people involved in the production of these manuscripts, तो उसने manuscripts के बारे में बहुत से लोग लगाए थे. अब हम कैलीग्राफी के बारे में पढ़ते हैं. The art of hand writing was considered an important skill. उस टाइम में था. Was practiced using under the different style. Out of the style, Mustalik style was a favorable of Akbar. It was in reality fluid style. It was written within the long horizontal strokes. It was written with the piece of tremenid having a trip of 10 mm. It was called column before writing. It was tippled in the carbon ink. The nib column was often spilled in the middle. It made the column absorb easily. कार्बन का भी इस्तेमाल किया जाता है. अब कलर पेंटिंग. द रूल ऑफ द पेंटर एंड द प्रोडक्शन ऑफ द मैनस्क्रिप्ट्स वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट. तो पेंटिंग करने वाले भी थे जो मैनस्क्रिप्ट बनाई थी. द क्रॉनिकल्स नरेटेड द इवेंट concerning the reign of the Mughal Empire. They also considered these events in visual form when the few of them seen in the book were given visual expression. The scribe left a few blank pages nearby. The painter studied the subject matter and prepared painting in accordance with what was described. Manuscripts. These paintings were called inwards. Later, these paintings were pasted on the blank pages of the manuscript. These paintings were called all miniatures. These paintings not only enhanced the beauty of the book but also communicated view about the kingdom power of the emperor. In fact, these paintings expressed what was otherwise not possible to be expressed. Although the written medium, Abul Fazil, the court historian of Akbar, described painting as a
magical art. In his view, painted in such an art which can instill life beyond the intimate things. This was a constant tension between the ruler and the ulama's representative Muslim orthodoxy about the painting which was depicted the interior. तो इसी के साथ एक क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।